Kandhamal district of Orissa is endowed with dense forest cover. Forests occupy 71% of the geographical area of the district, approximating 8,021 square kilometers. The Phulbani Forest Division was created in 1945. It has 7 forest ranges covering an area of more than 2,683 square kilometers of forest out of a total geographical area of 3,312 square kilometers. The forests in Phulbani are of North Indian tropical and deciduous type. In keeping with the national objectives and Government of Orissa's 1993 policy resolutions, joint forest management has been taken up with all vigor. So far, 483 Van Sanrakshan Samitis have been formed in the division while adopting participatory approach for restoration of degraded forests. उभय सरकार एवं ग्रामवासी मिलित उद्यम रे आमर कार्य चालू रही। यार उद्देश्य आमे ग्रामवासी वृंद किभली भाव रे आमर ग्राम्य जंगल सुरक्षा करि परिबु एवं परिवेश प्रदूषण को रोकी परिबु। आज आम जो वन संरक्षण समिति गठन करने जाऊे यहाँ हूँ ओडिशा सरकार 1993 रेजुलेशन अनुसार कम कर। आज आम एकत्रित होती संबेपदर ठार आमर ये निकट जो जंगल उजुड़ी जाए तार कि पुनरुद्धार हो पार से विषय और सहीटा कि उपरको नहीं पार जंगल सुरक्षा कर एकत्रित होचे। आज आम यही स्थान रे समस्त एकत्रित होई एक चिंताधारा रे जंगल सुरक्षा पाई संकल्पबद्ध करिवे। समस्त कहतु जे आमे जंगल सुरक्षा करबा The Phulbani Forest Development Agency, formed in 2001, has been the pioneer in forest-related developmental works in the state. The division is also implementing various projects under the NREGS. In order to improve the lot of the forest-dependent communities, microplant projects have been taken up under the World Food Programme. Soil conservation measures, digging of dug wells, planting of fruit-bearing trees, supply of grain bins, washer and pressure pumps are among the few community developmental initiatives taken up by the division. Self-help groups, particularly women SHGs, have been strengthened through income generation activities. Several success stories of forest conservation have been recorded due to the dedicated and deep involvement of the self-help groups and the Van Sanrakshan Samitis. ये आमर हलदी चाष जो केते शाल गछा सब काटी नौचंती रिजेनेशन जाउची आ गोटे होची फॉरेस्ट फायर आ गोटे होची एठी सब गाई गोरु छाड़ी दउचंती तो बहुत ग्रेजिंग इंसिडेंट्स रहउची
आठी बेसी गोड्स अच्छा छेली जो कि आमर माने जंगल एवं प्लांटेशन नष्ट कर देछन। Implementation of projects to increase the forest cover has been the thrust in all the 7 forest ranges. बर्तमान आमे चेष्टा करूँ झरना बही जाऊा पानी को अटकाई से किभली जलसेचन सुविधा दे से पनीपरिया अन्य जिनस चाष करने एवं से उपकृत होती जंगल उपर आउ क्षति क्षयक्षति बेसी करना। 62 वन संरक्षण समिति भितर 93 वन संरक्षण समिति अति माने पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं भल काम कर आउ केतोटी मध्यम धरणर अच्छा जो गुड़ा को आम एक्टिव करने चेष्टा करूँ एवं से अनुसार जंगल बहुत गुड़े जंगल आम जोटा को रक्षा कर पार्नु 162 वन संरक्षण समिति जरिया प्राय अधिकांश हेक्टर जंगल जमी आम रक्षणाबेक्षण कर। Forest conservation warrants conserving the soil, plantation and nursery raising activities. Raising huge stocks of seedlings in the nurseries annually forms the core of the division's seasonal programs. Medicinal plants under various state and central government programs have been taken up with all sincerity. As a result, established sal crop has come up in and around the villages which are close to the forests. मन इच्छा गछ जाक हाणिकी सब जाळणी फाड़ेनी आ अलग प्रकार काम धंदार लगाउथिलु किंतु से माने आसिक हमको बुझेला परे आमे भल भाबरे बुझिलु आउरी गछ को छाड़िया रे चेष्टा कलु। प्राय 100 हेक्टर जंगल आमे गछरे जंगल छाड़ीजु। One key feature of the developmental efforts of the division is strengthening the collection of non-timber forest produce. The NTFPs provide the livelihood support for at least 7 to 8 months a year in the households near the forests. Consequently, efforts are on to improve the market linkages of the NTFPs like siali leaves, mahul, karanja seeds, sal seeds, jackfruit, char seeds and mirabalams. आमे जो जंगल छाड़ीचु सेटा आस्ते आस्ते छोट छोट जेतेबेले थिला सेतेबेल को सेतिकी परिमाण रे वर्षा होन थिला आ आस्ते आस्ते जंगल बढ़ी जा पर वर्षा भी प्रचुर परिमाण रे होची आ हमर माने पानी रो कोनोसी प्रकार असुविधा हो नै तापर चाष बास भी ठीक माने ठीक भाव में आम कर पूर्वर कूओ पोखरी जाक जल्दी जल्दी सुखी जाऊला जंगल बढ़ी जा पर कूओ पोखरी रे भी पानी प्राय समय रोची तापर आम जलसेचन भी सुविधा करूँ तापर से जंगल गुड़ाक जो आम विभिन्न प्रकार जंगल रु विभिन्न प्रकार फल मूल संग्रह करी से जाक आनिक बिक्री करी आमर आर्थिक उपार्जन कर। Kandhamal is famous all over the world for organic turmeric. But the practice of collection of sal branchlets for covering the turmeric fields has been telling upon the forest growth. The division has been able to motivate the farmers not to fell all the sal saplings and shoots, but to retain a few of them in the stumps. With the help of the Van Sanrakshan Samitis, this message is spreading
and gaining acceptance among the turmeric farmers. A massive 7-year program beginning 2006-2007 has been launched in Phulbani through Orissa Forest Sector Development Program with support from the Japanese Bank of International Cooperation JBIC. ଯୌଥ ବା ଯୁଗ୍ମ ଜଙ୍ଗଲ ପରିଚାଳନା ତାକୁ ନେଇକିରି ଆମର ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ JBIC ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବା ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ସେକ୍ଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ डिविजन 200 गाँव को जंगल सन्निकट ग्रामको ସେଥିରେ संपुक्त करा जिवो फास्ट फेज रे आमे 48टा गाँव सिलेक्ट करिछु सेमानकु नेकिरी तांकर जंगल सुरक्षा करिया सहित जोटा का हमर डिग्रेडेड फॉरेस्ट अछि जोटा नष्ट हो जाइछि से जंगल पुनरुद्धार करा जिवो एवं से समस्त परिवार लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट करा जिवो माने जेपरिक जीवन शैली रे उन्नति आसियो सब रकम पदक्षेप निया जीवो या होची तार मुख्य अभिमुख्य. The focus is on improving crown density of degraded forests through income generating activities. The objective is also to bring an appreciable change in the standards of living of the communities depending on the forests. Because of concerted efforts, forest fire in Phulbani Forest Division has been kept to a minimum. से समस्त वन संरक्षण समिति तांकर पार्श्ववर्ती जंगल रक्षा करुचंती इधर आपण माने मध्य देखिबे गले प्रत्येक गाँव रे गोटे माने निश्चित भाव रे शाला जंगल किछि रक्षा करिचंती एवं पार्श्ववर्ती जंगल से माने सुरक्षा दउचंती एपरि कि केते गुडा के तांकु देखिकरी वन संरक्षण समिति गठन न होइतले मध्य से माने तांका पार्श्ववर्ती जंगल को अधुना सुरक्षा देउचंती. Today in Phulbani Forest Division there is a lot of change in the area of forest conservation. A combination of sincerity and participatory approach has been paying rich dividends, and it is there for everyone to see. Singapore!